मार्क 3 यानी LVM-3 का प्रयोग कर हमने 5,796 किलोग्राम के वन वेब उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था और आज भारत के गौरवशाली बाहुबली कहे जाने वाले LVM-3 रॉकेट का प्रयोग कर अब तक के सबसे भारी उपग्रह 6,100 किलोग्राम संचार उपग्रह को 520 किलोमीटर की निम्न गोलाकार भू कक्षा में 53 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करने जा रहे हैं। मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर सुश्री माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष के प्रमोशन से पूरी जानकारियां यहां आप तक साझा कर रहे हैं। यहां वैज्ञानिक गण इन सभी आंकड़ों पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। इन सभी गतिविधियों के पश्चात Lvm3-M6 का प्रमोशन आज 24 दिसंबर 2025 को भारतीय मानक समयानुसार सुबह 8:55 और 30 सेकंड पर श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच से किया जाएगा। Namaste and good morning viewers. This is a typical winter morning here at Sriharikota while the Lvm3-M6 launch vehicle is standing in all attention for carrying the customer satellite Bluebird Block 2. This mission is set to create a record for the highest payload to be carried by Lvm3 rockets so far. I am Madhuri giving the commentary in English from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, in the southern state of Andhra Pradesh in India. With me in the commentary box is Sri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. The launch is scheduled at 8:55 hours and 30 seconds Indian Standard Time today, that is on the 24th of December 2025 from the second launch pad. The intent of the launch is to place the Bluebird Block 2 communication satellite of AST Space Mobile USA in 520 kilometer circular orbit with an inclination of 53 degrees. Weight of the satellite is 6,100 kilograms, which is the highest so far launched by the Lvm3 rocket. उड़ान की उल्टी गिनती चालू है और इस समय हम उड़ान से 27 मिनट की दूरी पर हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो वर्तमान उपग्रह है जिसे प्रमोचित किया जा रहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष आधारित मोबाइल सेवाओं में उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। इस उपग्रह को सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन से जोड़कर संचार सेवाओं के लिए अभिकल्पित किया गया है। ब्लूबर्ड की श्रृंखला में यह उपग्रह विशाल संचार श्रृंखलाओं की विशेषताएं लिए हुए है जो कि कुल 2,400 स्क्वायर फीट तक विस्तृत हो सकते हैं और यह ऐसा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल US द्वारा आपसी समझौते के तहत जारी है। रोजर अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। The vehicle assembly building is about a kilometer away from the launch pad. The rocket is being moved carefully for further operations at the launch pad. Lvm3-M6 रॉकेट पूर्ण तैयार है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए द्वितीय प्रमोशन मंच पर सज्ज है। दर्शक दीर्घ यहाँ उपस्थित काफी ठंड होने के बावजूद यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। CNC to TTC director, all track elements are ready. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है। Lvm3-M6 Bluebird Block 2 mission launch. TTC director Roger. T-21 minutes. All stations change over to channel 2. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है।
L110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोचन यान के लिए अनुकूल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी और T0 पर S-200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The Bluebird Block 2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the 9th launch for the rocket. All the previous 8 missions have scripted tales of success. Present launch is the 3rd commercial mission. Mission Director, Roger. इसरो के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित, और यह भी आपने देखा मिशन डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का। Range Operations Director to Mission Director, all range systems are ready for the launch of Lvm3-M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director, Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of TTC network element for supporting Lvm3-M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director, Roger. Satellite Director to Mission Director. Satellite is ready for automatic launch. Mission Director, Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, TTC network and range, Mission Director hereby authorizes for the commencement of automatic launch sequence operations for launch of Lvm3-M6 Bluebird Block 2 mission today, 24th December 2025, 08 hours 55 minutes 30 seconds. All stations to note, Mission Director authorized the launch of Lvm3-M6 Bluebird Block 2 mission. अभी आपने देखा अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी। संतोषजनक स्थिति की पुष्टि होने पर मिशन निदेशक ने यान के प्रमोशन का अनुमोदन दे दिया है और अब प्रमोशन यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। The countdown for LVM3-M6 Bluebird Block 2 mission has been 24 hours long and commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:54 hours. During this time, the Earth storable propellants were serviced into the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. LCC2 and VLCC2 note, timing confirmed, external hold mode. VLCC, Roger. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all the systems, a go-ahead clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff a few minutes later. TCTC, data logger Saran, SHAR-1, SHAR-2. In a concert of all time-bound activities that culminate towards the launch, the various systems of the launch vehicle, satellite tracking and the range get ready in all respects. Based on the confirmation of readiness of all crucial elements, the mission director authorizes the commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director console to ALS console. Vehicle Director authorizes for the automatic launch sequence
for the LVM3-M6 Bluebird Block 2 mission. ALSC Roger. GS servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. Automatic launch sequence initiated for LVM3-M6 Bluebird Block 2 mission. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है। अब कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात तथा अंतिम जांच के पश्चात ऑनबोर्ड कंप्यूटर स्वतः ही प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू करेगा। We are 15 minutes away from the launch. Meanwhile, let me give you a brief about the rocket. The LVM-3 rocket stands 43.5 meters tall and weighs 640 tons at liftoff. It is a three-stage launch vehicle. The first stage being the two S-200 strap-on boosters operating on HTPB-based solid propellant. There is 204-ton propellant in each booster, while its size is 26.22 meters long and 3.2 meters in diameter. The Earth-storable liquid propellant-based L110 stage forms the core. This 21.4 meter long and 4 meter in diameter stage operates on the combination of UH-25 and N2O4. The upper stage is called C-25 and operates on cryogenic propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. This has 28.5 tons of propellant loading. The ogive-shaped payload fairing has a diameter of 5 meters and a height of 11 meters. LVM-3 की संरचना कुछ इस प्रकार है। LVM-3 में दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर जिसे हम S-200 कहते हैं, एक तरल नोदक वाले कोर चरण L110 के साथ संलग्न रहते हैं और तृतीय चरण है क्रायो अपर स्टेज जिसे C-25 स्टेज कहा जाता है। यह हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी कहलाता है। S-200 मोटर लगभग 2004 टन के ठोस प्रणोदक वाले दुनिया का सबसे बड़ा ठोस नोदक बूस्टर है। तरल नोदक वाले L110 चरण लगभग 115 टन तरल नोदक लिए रहते हैं। इसमें UH-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। इसके बाद C-25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण जो 28 टन क्रायोजेनिक ईंधन लिए हुए है। यह स्वदेशी हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर इक्विपमेंट बे और सबसे ऊपर में 5 मीटर व्यास के ऊष्मा कवच यानी हीट शील्ड में अंतरिक्ष यान को सुरक्षित किया गया है। इस तरह यान की कुल ऊंचाई 43.5 मीटर और कुल भार 640 टन का होता है। We are 12 minutes and 20 seconds away from the launch. Let me describe the mission events. The ignition of the two S-200 boosters simultaneously marks the T0 scheduled at 8:55:30 seconds and the launch vehicle LVM-3-M6 lifts off. The nominal burn duration for the S-200 motors is 132.5 seconds. The core L110 stage, powered by twin Vikas engines, ignites mid-air at an altitude of 45 kilometers and 106 seconds flight time. The two S-200 motors and L110 together thrust for some more time. At 132.5 seconds, the separation of S-200 boosters takes place. By this time, the rocket is imparted with a relative velocity of 1.5 kilometers per second. The separation of payload fairing. It's time now for a curtain raiser video. Over the years, ISRO has established itself as a trusted global space player,
successfully launching over 400 foreign satellites and demonstrating unmatched technical expertise and reliability. From PSLV-C2, carrying Germany's DLR Tubsat and South Korea's Kitsat-3, to the record-breaking PSLV-C37, deploying 101 customer satellites in one go, and recent missions like Lvm3-M2 OneWeb India 1, Lvm3-M3 OneWeb India 2, and PSLV-C59 Proba 3. ISRO continues advancing space technology with precision and innovation. ISRO is now set to embark on yet another landmark commercial mission, the Lvm3-M6 Bluebird mission, to launch the US-based AST SpaceMobile's Bluebird communication satellite, Block 2, through New Space India Limited as a public sector undertaking of the Government of India under the Department of Space. Lvm3 launch vehicle is the ISRO's heaviest vehicle. Through its Lvm3-M6 mission, it will deploy the Bluebird Block 2 satellite, weighing around 6,000 kilograms, into low Earth orbit. The Bluebird Block 2 series forms part of Space Mobile Constellation Network, designed to provide direct-to-smartphone voice and broadband connectivity anywhere on Earth, without the need for ground hardware. The Lvm3 vehicle has an impeccable 100% proven success track record and has powered some of India's most prestigious missions, including Chandrayaan 2 and 3 and CMS-3 missions. Technically, Lvm3 is a three-stage launch vehicle featuring two S-200 solid strap-on boosters, a liquid core stage, L-110, and an indigenously developed high-thrust cryogenic upper stage, C-25, powered by liquid oxygen, LOX, and liquid hydrogen, LH2. Standing 43.5 meters tall, with a gross liftoff mass of 640 tons and a 5-meter diameter payload fairing, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India has soared to the forefront of global space exploration. His transformative space reforms have ignited a new era of innovation, ambition, and discovery. With this mission, ISRO will once again showcase its mastery, reaffirming India's unstoppable rise as a global space power. The mission events for this upcoming mission are going to be like this. At the burnout of L-110, the velocity of the rocket will be 1.5 kilometers per second. The separation of payload fairing and initiation of closed loop guidance will take place at 174 seconds and 179 seconds respectively into the flight, since by then the rocket would have ascended over the dense atmosphere. The L-110 separation takes place 301.6 seconds into flight, having completed its 196 seconds burn time for this mission. The relative velocity at L-110 burnout is 3.4 kilometers per second, and the launch vehicle would have ascended to an altitude of 261.5 kilometers. 3 seconds later, the third stage, C-25 cryogenic stage, begins its operation. For the present mission, its burn duration is 12 minutes and 20 seconds. A significant delta V of 3.89 kilometers per second is imparted to the launch vehicle during C-25 operation, while it gains 255 kilometers altitude also. The orbital injection conditions for the AST Bluebird Block 2 satellite are expected to be achieved at 939.4 seconds into flight. The complete flight duration for the present mission is 15 minutes 40 seconds.
L1 एक्सेलेरोन LVM3-M6 प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम T0 पर दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। इससे यान का प्रमोशन मंच से उत्थापन के लिए पर्याप्त प्रणोद प्राप्त होगा। यह प्रथम चरण लगभग 132 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और यान को फ्लेक्स नोजल की मदद से दिशा निर्धारण करेगा। यह चरण यान को लगभग 73 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रथम चरण के कार्यकाल के पूर्व ही द्वितीय चरण यानी L110 तरल नोदक वाले चरण को भी प्रज्वलित किया जाएगा। दोनों चरण यानी S200 बूस्टर और L110 चरण लगभग 26 सेकंड तक साथ प्रज्वलित रहेंगे और इस तरह वो यान को 1.56 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेंगे और इसके पश्चात उत्थापन से 132 सेकंड पर दोनों S200 बूस्टर्स यानी प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 200 सेकंड तक जारी रखेगा और इस दौरान यान कुल 261.6 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के दौरान यान घने वातावरण को पार कर चुका होगा और इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। अतिरिक्त वजन को यान से पृथक करना ही यान की कुशलता और क्षमता को बढ़ाती है। द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। पृथकन के 2 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण यानी C25 क्रायोजेनिक स्टेज को प्रज्वलित किया जाएगा। यह अंतिम चरण है। इसका प्रज्वलन काल सबसे ज्यादा होता है। यह लगभग 600 सेकंड्स तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यान क्रायो ईंधन की मदद से 520 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगा और सापेक्ष गति 7.29 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षा में प्रमोशन की उचित स्थितियां प्राप्त होते ही तृतीय चरण को स्वतः बंद किया जाएगा और तब ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को यान से अलग कर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उड़ान की उल्टी गिनती जारी है और अब हम उड़ान से 3 मिनट 28 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी दर्शकों का यहां उत्साह, ये देखिए हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए। T-3 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S200 बूस्टर्स और L110 सभी चरणों के फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time. When a huge rocket like LVM3 ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. 2 minutes. यह प्रमोशन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर में स्थित रडार स्टेशन इसमें पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे और इससे आगे निकलते हुए इंडोनेशिया स्थित बोगोर और ऑस्ट्रेलिया स्थित यत्रगा ग्राउंड स्टेशन की मदद से ट्रैकिंग की जाएगी। The downrange tracking stations of Port Blair, Bogor and Yataraga will be participating for tracking the rocket apart from the Shar tracking station closer to the liftoff. अब हम उड़ान से 1 All मिनट की stations दूरी पर हैं। Stand by for the time mark. T-1 minute.
दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, -55 T माइनस 8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे Gas bottle ready. और T0 पर S-200 बूस्टर्स -45 प्रथम चरण का seconds. प्रज्वलन शुरू होगा। HPP open. We are 40 Minus seconds 40 seconds. away from Demolition T0. engine open. The viewers may Minus watch 35 out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system Minus starts 30 its seconds. operation. Real-time programs activated. VSPP open. -25 seconds. -20 seconds. Ignition arms down. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. Lvm3-M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Liftoff normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM3-M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM3-M6 Plus 30 रॉकेट seconds. दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Start to engine main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिकन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. First Burn stage duration performance for normal. present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स और L110 Performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The Proceed. L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S-200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से- guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे
एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपने दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shar, Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Cryo stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shar and Port Blair ground stations L110 continue to shut off. acquire data. L110 stage separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3-M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम
भारी है। +9 minutes. यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं, जो विस्तृत होकर लगभग 2400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे। इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है। यह 4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने +10 minutes. में सक्षम होंगे और वर्तमान में यह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। The Bluebird Block 2 communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload the LVM-3 rocket has so far carried. The satellite is a part of the next generation of Bluebird communication satellites designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. Cryo stage performance normal. This constellation of satellites will enable 4G and 5G voice and video calls, texts, streaming and data for everyone, everywhere at all times. It features a 223 square meter phased array, making it the largest commercial communication satellite ever deployed in low Earth orbit. +11 minutes. The launch window for this launch is razor thin. The target orbit requires exact phasing and there is a need to ensure global coverage. One of the important global orbital parameters is the right extension of ascending node or RAN. It is the angle measured eastward from the vernal equinox to the point where a satellite crosses the equator going north. It defines the orientation of the orbital plane in space. Two satellites with the same inclination and attitude but different RAN are in different orbital planes. By combining RAN spacing or the plane distribution and phasing by way of satellite spacing, constellations achieve near global coverage. To insert satellites into specific RAN slots, launches must occur at precise times when the launch site aligns with the designed orbital plane. This mission is being undertaken as a part of commercial agreement between NSIL and AST and Science LLC, a US-based company. तृतीय और अंतिम चरण का प्रज्वलन जारी है। LVM3-M6 अपने मिशन की ओर अग्रसर। LVM3 प्रमोचक यान नए यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम वाले उपग्रह को निम्न भूकक्षा में ले जाने की है। LVM3 के पिछले मिशनों में भारत का गौरव बढ़ाने वाले चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, संचार उपग्रह CMS-03 और वाणिज्यिक मिशन में OneWeb India 1, OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक हमने देखा। 13 minutes. यह इस प्रमोचन यान की 6वीं प्रचालनरत उड़ान है और तीसरी वाणिज्यिक उड़ान है। अब तक पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सभी मिशन को पूरा करने LVM3 रॉकेट इस बार भी सज्ज है LVM3-M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन को पूरा करने के लिए। अब हम उड़ान से 815 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 526 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Cryo stage performance normal.
plus 14 minutes. We are 14 minutes past the launch time. The cryogenic stage presently thrusting. The trajectory of the rocket precisely following the prediction. तृतीय चरण पूर्णतः सामान्य, अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए उद्दिष्ट पथ की ओर जा रहा है और कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कि तृतीय चरण को कक्षा की स्थितियां प्राप्त होने पर स्वतः बंद कर दिया जाएगा और तत्पश्चात हमारे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा. A relative velocity of 7.07 kilometers per second has been acquired so far. Cryo stage performance normal. The cryo stage is expected to perform till, Cryo stage shut off. and here we have a confirmation of the shut Satellite off of injection conditions achieved. the shut off of cryo stage and eager awaiting for the satellite deployment. Bluebird Block 2 satellite separated. LVM3-M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. Handing over to mission director. अभी अभी रेंज निदेशक को आपने सुना. Bluebird Block 2 spacecraft is successfully injected into the specified orbit. LVM3-M6 mission is successfully accomplished. ये सभी के लिए हर्ष और उत्साह का पल यहाँ पर, जिसमें इस मिशन में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है. We have had a successful mission of LVM3-M6 Bluebird Block 2 mission. Congratulations to Team Isro, Team Ncil and the customers AST Space Mobile. Do stay connected for the address by Secretary DOS, Chairman Isro Dr. V. Narayanan and senior executives. We sign off from the commentary box. Namaskar. जी हम आपसे आगे लेते हैं सभी दर्शकों और इनके उपभोक्ताओं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं. आप सभी को बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. राजा हेलो मगेश हेलो
Very good morning to all of you. I am extremely happy to announce that LVM3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space, and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, OneWeb missions and CMS-3 satellite. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion we have got. This is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. With this mission, India has successfully launched 434 satellites for 34 countries. In today's mission, as I told, all the vehicle systems have performed extremely well. We have also, for the first time, inducted electromechanical actuation control system for the S-200, which is also successfully demonstrated for the first time. This gives us great confidence for the Gaganyaan program. And this achievement is because of the guidance, mentorship given by our elders, the robust review mechanism, hard and smart work of every Department of Space team members, our industrial partners, academia, for their outstanding contribution. On this occasion, let me also thank our mentors for the strong foundation made for us to stand great and accomplish this type of great missions. Also, let me take the opportunity to thank AST Space Mobile for having great confidence on Indian launcher and giving this opportunity for accomplishing this great feat. Even though a launch vehicle mission is a very, very tough job, today, the way the launcher has performed, that demonstrate the confidence and the single-minded devotion and hard and smart work of every members of the space activity. Let me congratulate all the review team members, audit committee members, and the entire elders, all the elders, and our family members on this great occasion. As you all know, the reward for hard work is more work. We are having lot of program in our hand, and we have to accomplish everything perfectly in a very systematic way. Right now,
the orbit details are with me. We intended to achieve 520 kilometer circular orbit. What we have got is close to 518.5 kilometer circular orbit. That is the performance of this vehicle. With this, right now, we are having the leaders of Indian space program with me. So first, let me ask the project director and the mission director, Mr. Victor Joseph, to address the gathering. Mr. Victor. Thank you, sir. Very good morning to everyone. And once again, LVM3 has risen to the occasion. Respected Chairman ISRO, former Chairman, Center Directors, senior colleagues, and all those attending here and online. Today, we have the 9th consecutive successful flight of LVM3 and the 3rd international collaborative mission for LVM3. And today, we successfully launched the heaviest satellite ever lifted from Indian soil, the Bluebird Block 2, and placed it accurately in the designated orbit. On this significant occasion, I sincerely thank our respected Chairman for his continued leadership, guidance and encouragement, and I also acknowledge the steady support provided by all Center Directors throughout this mission. I thank the efforts of Nsiln team for their effective coordination, and I thank AST for placing the trust in LVM3 for this very important launch. And special appreciation to all the review forums whose rigorous and timely evaluations ensured mission readiness at every stage. My sincere thanks goes to the development teams across all the launch vehicle centers, our industry partners, the assembly teams, the technical facilities, the quality safety groups. Our collaborative work culture is once again demonstrated. I also take this opportunity to acknowledge the families of our team members whose patience and support form the backbone of our collective efforts. I wish to specially recognize my project team, the Vehicle Director Biju Thomas, Associate Vehicle Director Sudesh, Associate Project Director Rajesh Shagar, the PMO team led by Dayal, Deputy Project Directors, and every member of LVM3 team. We were able to realize this back-to-back mission success within a very remarkably short time frame following the M5 mission. And also, we could demonstrate the technologies for significant jump in the payload capability of LVM3. So before I conclude, I wish AST team a smooth and successful spacecraft operations in the days ahead, and with the same focus, discipline and teamwork, I am confident that we will continue to contribute meaningfully to nation's space endeavors. Thank you. We have got the launch vehicle team led by the Director of Vikram Sarabhai Space Center, Mr. Rajarajan with us. Mr. Rajarajan.